गुप्ता सर शुरू नहीं हो रहा। हेलो सर, actually message receive हुआ है, किसी को कुछ setting कर दो। हाँ प्रधान सर नमस्कार। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? यस हाँ सर। हाँ आवाज आ रही है। हाँ हाँ हाँ, आप जान गए होंगे, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं मैंने आपको मैंने भेजा जरा इसको, मैंने सोचा आपने देखा होगा, आप जरा एक मिनट चेक कर लीजिए तो हम उसको भेज देंगे। फॉर्मेटिंग लेटर है और मिनट्स है, जस्ट आप चेक कर लीजिए। उसी का आप ही का वेट कर रहे थे, मैंने एक बार जस्ट आप देख लीजिए फिर तभी फॉरवर्ड करिए। नहीं नहीं हम तो ऐसा कर रहे हैं, हम उसको अभी ऐसे ही भेज दे रहे हैं और टीवी से अप्रूवल आके शाम तक आएगा, वो अलग बात है, लेकिन हम अपना ईमेल से भेज देते हैं, साइन नहीं होता, ईमेल से भेज देते हैं तो अपना हम काम चलाएंगे। कॉपी टू DGI से, ठीक है, DGI से कॉपी टू इसको सेक्रेटरी को एड्रेस करें कि डिप्टी सेक्रेटरी को एड्रेस करें? जॉइंट सेक्रेटरी को कर सकते हैं। नहीं मतलब लेटर तो साइन करके अंडर सेक्रेटरी भेजता है, लेकिन हम तो सेक्रेटरी को लिखते हैं ना। हाँ हैं? सेक्रेटरी को ठीक है, हाँ सेक्रेटरी को यस ठीक 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 है। अच्छा मैं देख लूँ। ठीक है। Good morning, everyone. I am pleased to welcome you to the first IBRO-APRC Associate School on Advances in Nanoneurotherapeutics and Neurological Disorders. It is my privilege to welcome our Chief Guest, Dr. Montu Patel,
President, Pharmacy Council of India. IBRO Chair, Dr. Pike-See, Chair. President preside over the function, guest of honor and keynote speaker Professor G.D.Gupta, President AIIMS-Bhopal and AIIMS-Jammu. Guest of honor Dr. Ekta Kapoor, Scientist F, DST-Govt of India. Respected Chairman ISF College of Pharmacy Moga, Sh.Parveen Garg, Engineer Er.Janesh Garg, Chairman TLF, a global school, Moga. Dr. Charan Singh, Convener, IBRO-APRC and Associate Professor of ISF College of Pharmacy, Moga. Professor G.D.Gupta, Co-Convenor, IBRO-APRC, Associate School and Director, ISF College of Pharmacy, Moga. Professor R.K. Narang, Vice Principal, ISF College of Pharmacy, Moga. All the speakers at international and national platform, all the awardees and participants of IBRO-APRC School Moga, all the heads of respective departments and faculty members of ISF College of Pharmacy Moga. I, R.K. Singh, Co-Convenor IBRO-APRC, welcome you all to the first IBRO-APRC Associate School on Advances in Nanoneurotherapeutics and Neurological Disorders, organized by ISF College of Pharmacy Moga, Punjab, India, and sponsored by International Brain Research Organization, Asia Pacific Regional Committee, IBRO-APRC. As science knows no boundaries because knowledge belongs to humanity and is the torch that illuminates the world. With this thought, we'll now have our traditional auspicious lamp lighting ceremony as a tribute to Ma Saraswati, the goddess of knowledge. With due permission of our chief guest, I request the respected chairman, ISF College of Pharmacy, Moga, Sh.Parveen Garg, Engineer Er.Janesh Garg, Professor G.D. Gupta, Dr. R.K. Narang, and all the head of the respective departments to enlighten the lamp. गायत्री मंत्र।
सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे रामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. Respected honorable chief guest, very dynamic, dedicated, professional and राष्ट्र को समर्पित Dr.Montu K. Patel, President, Pharmacy Council of India, guest of honor and keynote speaker, Guru's Guru and signature of health profession, Professor Dr. G.D.Gupta, President, AIIMS-Bhopal and Jammu, Chairman, RAC, ISFCP, Moga. Preside over the function, Shri Parveen Garg, Chairman, ISFCP, Moga. Guest of honors, Dr.Ekta Kapoor, Scientist Staff, DST, Government of India. Dr. Pike-See, Chair, International Brain Research Organization, Asia Pacific Regional Committee and Associate Professor, Department of Human Anatomy, Faculty of Medicine and Health Science, University, Potra, Malaysia. Engineer, Er.Janesh Garg, Chairman, TLFA Global School. Dr. Muskan Garg, Director SPAL. On behalf of online 4 days first AIIMS-Bhopal Associate School on Advanced in Nanoneurotherapeutics and Neurological Disorder, as a Co-Convenor and Director of Institutes, it's a matter of great honor and privilege for me to warmly welcome today's function, Chief Guest, preside over the function, Guest of Honor, distinguished guest from core of my heart. I also welcome Professor Dr. Charan, Vice Principal ISFCP and Vice President SPER. I also welcome today's convener Dr. Charan Singh and co-convenor Dr. Aarti Singh ji. I welcome all HODs, all the awardee and participants. I also welcome organizing committee members, IT, press and media. It's my prime responsibility to represent a brief about the institute. ISF College of Pharmacy started UG program in 2000 and presently running diploma, UG, post-graduation in 9 branches, PharmD, PharmD-PB, PhD program in pharmaceutical sciences under the leadership of Worthy Chairman Shri Parveen Garg ji. This college is NAC accredited A grade with the autonomous status by the UGC and affiliating university for 10 years. This college is developed as emerging leader with the vision to establish as a center of excellence in education, research, innovation, training, and entrepreneurship in pharmaceutical sciences. Hello. This college is recognized as a national level by various professional bodies and national institutional ranking framework. Thank you. He achieved 29th rank in India, Atal ranking Institute on innovation and achievements in area excellent in college category, and also recipient of Utkrist Sansthan Vishwakarma Award in 2020 by AICT. In AICT CII, we have achieved 6 times platinum category and 3 times rank 3 with the platinum category. Sir, national record with the longest teaching relay marathon on pharmaceutical sciences, which is recorded in India WOCOP record in 2021. Quality is the hallmark of our institution, and it has highly qualified and experienced and dedicated faculty members qualified from renowned university. In college, running many research projects approved by DST Feast, DST Sharp, NMPB, GDT, DST, AICT, PC, CST, MSME, and many JRF and SRF also. In 2021, our research team published
more than 132 papers with the impact factor of 348. We have published 17 books and 12 chapters, and number of the patents. And also we have the 4 research projects in 2021 received from various bodies. Running Center of Punjab State Council, Science and Technology as a SC Crystal Cell, is of GBT, disease initiative known as DNDI, many MOU related to the research center, industry, universities. We are also running the center of the Science for Me, Healthcare Prescription, National Institute of the Ayurveda for Drug Addiction Information Center and Counseling for Healthy Body, Health Mind and for the Happiness. We are running Science of Spirituality Center, Hardware and Universal Human Value Center. Sir, we have organized many conferences, workshops and symposium, including the IBRO supported conference also organized, sir. In 3 days IBRO supported meeting and workshop on recent progress in brain research and drug delivery system, we have received a huge response from PAN of India, and participant was from 24 states and 5 countries. Detail of the IBRO-APRC school will be presented by Dr. Charan Singh ji, chairperson of this first IBRO-APRC. My good wishes to all the awardee and participant, and request to attend all online technical sessions and follow all rules and regulation, enjoy all technical session and also participate during the discussion and interactive sessions. I know some technical clinch or some of the difficulty may be take place due to the online mode of this IBRO school. Our organizing team always available for your help and resolve the problem immediately. I again welcome and extend my heartfelt thanks to the chief guest, keynote speaker, guest of honor, renowned speaker for accepting our invitation and grace the function. Thank you very much. Thank you very much, sir, for providing your briefing about ISF College of Pharmacy, Moga. Now, I would like to welcome Dr. Charan Singh, Convener, IBRO-APRC School, Associate School, for briefing about IBRO-APRC School. Thank you, Dr. Singh. Good morning, Honorable Chief Guest, Chair, IBRO-APRC, preside over the function, patron, co-patron, co-conveners, distinguished guests of honor, respected faculty members, beloved participants, and all who are joining us today. I am deeply grateful for your presence today. I am humbled and honored to speak before you as the convener of First IBRO-APRC Associate School at ISF College of Pharmacy, Moga, Punjab, India. There are so many people who have joined us today and mean a lot to me. So my gratitude has been moved to the end of my remarks. International Brain Research Organization is a global association of neuroscience societies which is established in 1961, 61 years ago. It aims to promote and support the neuroscience around the globe, and it consists of more than 90 international, regional and national scientific members, which constitute IBRO Governing Council, which in line with IBRO Executive Council and 5 regional committees, address the needs and advancement of the work of the individual research scientists and community of the same. As I have told you that there are 5 regional committees under the International Brain Research Organization. APRC is one of those 5 committees.
So Asia Pacific Regional Committee itself comprises of 13 member organizations from Asia Pacific region, with its chief as Professor Pixi from University Putra Malaysia, who is heading the IBRO-APRC. And so far, our dear India is concerned, then we have Indian Academy of Neurosciences, which represents India in the APRC region. So this conference is focused on the advancement of nanoneurotherapeutics and neurological disorders. So we have two components in the APRC school, which comprises of invited talks from the globally renowned scientists or neuroscientists in the area of neurological disorders and drug delivery science and technology. The second component of the school is the post-session of the awardees. So we have selected 35 awardees in the IBRO school, those who are going to present their abstracts in the form of their master's, PhD or postdoc research work. Thereafter, so far the school is concerned, as the theme of the school is advances on nanoneurotherapeutics and neurological disorders. So all the invited talks pertains to the same theme and the abstract or the research work of the participants as well as awardees. In brief, if we talk about the invited talks, then these are pertaining to the human neuronal stem cells, 3D printed biomaterials, then brain trauma, TBI, traumatic brain injury, to name a few. So this school includes the plenary lecture and the globally acclaimed scientist. Lastly, IBRO provides a wonderful platform for the presentation of up-to-date findings and receive feedback from the colleagues belonging to different state of the scientific community. I am confident and sure at the same time that the school will have a phenomenal impact and provide help to the to enrichment of cross-disciplinary knowledge and global vision to solve the research problem. So with these words, I restrict myself here and I hand over the mic to Dr. R.T. Singh. Thank you so much. Thank you very much, Dr. Charan Singh, for providing briefing about IBRO-APRC school. Thank you very much. Now, I would like to welcome Dr. Pixi Cheah, Chair IBRO-APRC Associate School for speech. Greetings, ladies and gentlemen. It is my utmost gratitude to welcome you to this 4 days IBRO Associate School with the theme of Advance in Nanoneurotherapeutics and Neurological Disorders, hosted by the ISF. College of Pharmacy, Moga, India. This is one of the 6 schools supported by IBRO-APRC across the Asia-Pacific region in year 2022. This scientific event aims to educate the students and also the young scientists in neuroscience research. It serves as an ideal platform to create quality interactions between the students and also the experts in the field. I strongly believe that this school will further enhance the scientific communications and also the collaboration among scientists, researchers, and also academicians at different level of expertise. I wish to express my gratitude, appreciation to all the collaborative efforts from both local and international speakers for your noble efforts in this knowledge sharing activity. I hope that this event will pave the ways to engage and strengthen the support among the key policymakers, authoritative leaders,
and also philanthropies to increase the resources to support the neuroscience research in the region, especially in India. To the organizing committee, including Dr. Charan Singh as the chairperson, and Professor G.D.Gupta, the director of ISF College of Pharmacy, as the co-chairperson, and also Dr. R.T. Singh and other significant members. Congratulations for your success in hosting this event in India. I wish you and team a great success. To participants and awardees of the school, I hope you a good learning experience in this IBRO Associate School. And ladies and gentlemen, this school is funded by the ISFCP school program as one of our commitment to promote neuroscience in Asia Pacific region. I would like to take the next few minutes and taking this opportunity to share with you the vision of IBRO and couple of funding available for the fellow scientists, societies, and also institutions. Thank you. Thank you very much, ma'am, for briefing about AIIMS-Bhopal and the associated opportunities. Thank you very much. Now, I would like to welcome the guest of honor, Dr.Ekta Kapoor, Scientist F, DST Government of India, for her speech. A very good morning to one and all. It's my great privilege to be a part of this IBRO workshop, which is going to continue for November 7th to 10th.
And I'm highly delighted to see the work that is being done by ISF College of Pharmacy, Moga. And this is actually, I would say, the entire work that is being done in the area of research is creating an ecosystem which will help the students of the college to learn new techniques and also to learn how these techniques need to be performed all over the globe. For this, I would also like to highlight and flag that we have a program on good laboratory practices, which is being implemented by the OECD Secretariat. And the OECD is the Organization for Economic Cooperation and Development. The OECD has 47 member countries as on date. And we also, being non-members of the OECD, are a full signatory to mutual acceptance of data. An immense trade and economic benefit to the country, as well as it also enhances the value of the data that is generated by GLP facilities in India and also by the institutions which follow the OECD principles of good laboratory practices or the OECD principles of GLP. With this, I would again like to congratulate ISF College of Pharmacy and wish all the best to the organizers. I consider that this will provide a very good platform for the researchers and students to interact on imperative issues which are, being flagged in the research on neuropharmacology and diseases. And I would also like to flag the issue that it will be good that we spread awareness on good laboratory practices amongst all the researchers and students so that the research work that is being performed in various institutions, academic institutions, research institutions and R&D labs in the country is as per the principles of GLP and which will further foster the acceptability of these results world over. With this, I again congratulate the organizers and wish all the best to the participants. Thank you so much. Namaskar. Thank you very much, ma'am, for your kind words. Now, I would like to welcome guest of honor and keynote speaker, Professor Cheif Gupta, President AIIMS-Bhopal and AIIMS-Jammu for his speech. As he doesn't need any introduction, but I just mention some highlight about Professor Cheif Gupta. That Professor Cheif Gupta, he is MD, MBBS and MD from King George Medical College, Lucknow. He is a professor and head Department of Pharmacology and spokesperson at AIIMS Delhi. He earlier served as Sub-Dean AIIMS in 1996 to 2001 and Director at Indian Institute of Toxicological Research, a CSIR lab in Lucknow from 2003 to 2005. Dr. Gupta is in charge of National Poison Information Center and is also National Scientific Co-Coordinator of Pharmacovigilance Program of India. He has been honored with fellowship of National Academy of Medical Sciences, Indian Pharmacological Society, National Academy of Science, Indian Academy of Neurosciences, and Society of Toxicology. He has more than 180 publications in international and national journals and several chapters in books to his credit. Dr. Gupta is a recipient of several awards, including Young Scientist Medal from Indian National Science Academy, Shakuntala Amir Chand Prize from Indian Council of Medical Research, Chandrakanta Dandiya Prize, G. Achari Oration Award from Indian Pharmacological Society, Major Journal S.L. Bhatia Oration Award from Association
of Physiologist of India, AEB Honours Award from Academy of Environmental Biology, CL Malhotra Prize from Association of Physiologists and Pharmacologists of India, to name a few. Dr. Gupta is currently President of Society of Toxicology, India, and he is a Dean, Indian Society for Rational Pharmacotherapeutics, and was a President of Indian Pharmacological Society from 2005 to 2006. He is the editor of Indian Journal of Physiology and Pharmacology and a member editorial board of several international and Indian journals. He is the chairman of National Committee of IUPS Upahar of Indian National Science Academy INSA, and a member of Upahar IOSP Committee and member of Advisory Committee on the Safety of Medicinal Product of WHO. He is also the chairman of Equivalence Committee and the member Ethics Committee of Medical Council of India. He has been the member of Project Advisory Committee, Research Council, and a Scientific Advisory Committee and Task Force of CSIR, ICMR, DST, and DBT, and also the chairman of SAC of National Institute of Occupational Health. He is the chairman of National GLP Technical Committee of DST. हेलो, आपके पास 10 मिनट है सर. He is also the member of Scientific Body of Indian Pharmacopoeia, the chairman of Expert Committee on Clinical Medicine and Pharmacology of Indian Pharmacopoeia. He was also the governing body member of Indira Gandhi Postgraduate Institute of Medical Education and Research, Patna. He was the chairman of National Essential Medicine List Committee 2011 of Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, and also the chairman of the working group of high-powered Inter-Ministerial Coordination Committee to look into the matters of implementation, government commitment to provide quality medicine at affordable prices. So I welcome you, sir. हेलो. गुड मॉर्निंग एवरीवन. सो मैं थोड़ा सा माफी चाहूंगा प्रोफेसर वाई.के. गुप्ता सर से. Dr. Montu Patel ji, one have the work in the hospital. So can I take sir permission, sir? Thank you very much, sir. So I request to Dr. Montu Patel ji. He is the chief guest of today's function. So I request Dr. Montu Patel, please give your blessing, sir. You're welcome, sir. Good morning. Good morning. Thank you for inviting me in the AIIMS-Bhopal Associate School on the Advancing Nanopharmaceuticals and Neurological Disorder event. And thank you for all the organizers and the participants to conduct the program on this event. And I think this is a need of the today need of the India for the development of the Nanoneurotherapeutics and the neurological disease are increasing day by day, because after the corona very tricky situation is going on. बहुत लोगों ने टेंशन, न्यूरोलॉजिकल ऑर्डर भी बहुत ज्यादा हो गए, और जो अपने जो मेरी आवाज आ रही है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. You are audible. You are audible. G.D. गुप्ता जी और जो भी हमारे बहुत अच्छे रिसर्चर भी रहे, और वाई.के. गुप्ता जी एम्स के जो भोपाल के डायरेक्टर है, उन्होंने भी बहुत सारा काम इस पे किया है, और सभी जगह पे मैंने देखा है कि गुप्ता जी फार्मडी स्टूडेंट और फार्मेसी को बहुत ही प्रमोट करते रहते हैं.
तो हमारे लिए भी अपॉर्चुनिटी है कि गुप्ता जी जैसे हमारे साथ इस इवेंट में जुड़े हुए हैं और हमारे फार्मेसी का प्रोफेशन को कैसे भी करके अपलिफ्ट करने के लिए मंत्रालय से लेकर सारे डिपार्टमेंट में आईपीसी में भी उन्होंने बहुत अच्छा हमारा फार्मेसी का ब्रीफ किया और उन लोगों का फार्मेसी में इम्पोर्टेंस हमारे फार्मडी को कैसे लिए जाए वैसे भी उन्होंने एक प्रपोजल रखा था। तो मुझे लगता है कि इस तरह जो इवेंट होगी जो जिसे डे बाय डे हमारा इब्रो और ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं जो एपीआरसी और मोगा आईएफएस मोगा जो काम कर रही है, अगर ऐसा हम ऑनलाइन या तो ऑफलाइन जो वर्चुअल सेमिनार करने का, क्योंकि मैं कोई साइंटिस्ट तो हूँ नहीं तो इस पे मैं बोलूंगा, पर मैं आपको जनरल बात बोलूंगा कि ऐसे प्रोग्राम करने से, क्योंकि पहले फार्मेसी प्रोफेशन कहीं और दिखता था, अभी मुझे लगता है कि हमारा फार्मेसी प्रोफेशन पूरे वर्ल्ड में दिखने लगा है, वो भी इंडिया का फार्मेसी, इसीलिए फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बने। तो अब जो भी रिसर्च होगा, जो भी नया नया डेवलपमेंट होगा, वो ड्यू टू द इंडिया ही होगा। और इंडिया में भी जो हमारी भारत सरकार है फार्मेसी के लिए है, तो फार्मास्यूटिकल बिजनेस के लिए, मेडिकल डिवाइस के लिए, नैनो पार्टिकल्स के लिए एकदम एग्रेसिव है। आपको पता होगी कि नैनो यूरिया भी मंत्रालय ने लॉन्च कर दिया है। जो भी हमारी फार्मा में टेक्नोलॉजी आती है वो पूरी एग्रीकल्चर में भी वो टेक्नोलॉजी पास आउट होती है। तो रिसर्चर हम हैं और वही टेक्नोलॉजी बाकी के सारे जगह पे वो लॉन्च होती है। तो मुझे लगता है कि जो नैनो टेक्नोलॉजी का जो है, क्योंकि साइड इफेक्ट्स वो सब ज्यादा अभी डे बाय डे दवाई ज्यादा लो, मल्टीपल मेडिसिन लेने से बहुत सारा वो होता है, तो टारगेटेड वो काम करने के लिए तो नैनो पे काम करने के, क्योंकि मेरा भी पीएचडी का सब्जेक्ट नैनो फार्मा नैनो पार्टिकल्स की था। तो अब जो होगा वो टारगेटेड डिलीवरी सिस्टम पे ही पूरा वर्ल्ड डेवलप होगा, क्योंकि उसकी साइड इफेक्ट कम होगी तो बाकी की कॉम्प्लेक्सिटी भी कम हो जाएगी। तो इसका फ्यूचर यही है और भारत सरकार इसको प्रमोट करने में लगी है कि कैसे भी करके भारत के रिसर्च को प्रमोट करें, नैनो पार्टिकल्स, नैनो फॉर्मुलेशन को प्रमोट करें, नैनो मेडिकल डिवाइस भी, जैसे गुप्ता जी ने मुझे पता है कि बोला था कि नैनो मेडिकल डिवाइस भी अब आने लगे, तो सभी जगह पे यही प्रमोट हो रहा है। तो इधर जितने भी हमारे फार्मेसी प्रोफेशन के लोग जुड़े हुए हैं, अगर ये इवेंट में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आपका फार्मेसी काउंसिल इंडिया में, क्योंकि फार्मेसी काउंसिल इंडिया भी सोच रही है कि कैसे भी करके हम फार्मेसी को कैसे प्रमोट करें, तो आगे जाके जो भी रिसर्चर, साइंटिस्ट अथवा जो भी लोग इधर जुड़े हैं, आपका कोई भी रिसर्च होगा तो हम आगे जाके इवेंट करने ही वाले हैं, वो फरवरी या तो मार्च में, तो उसमें आप पार्टिसिपेट करना, जिससे आपका लैब स्केल अथवा तो जो लेबोरेटरी का अथवा तो आपका पेटेंट का जो भी हो, आपका रिसर्च हो, आपका आइडिया हो, वो पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में आपका फेमस हो, और उसके लिए फार्मेसी काउंसिल इंडिया प्लेटफॉर्म बनेगी। वैसा हमारा सोचना है कि फार्मेसी को फार्मेसी काउंसिल ही प्रमोट करेगी, तभी हमारा प्रोफेशन आगे बढ़ पाएगा। तो इस प्रोग्राम के माध्यम में जितने भी लोग जुड़े हैं, आप सभी को मेरी रिक्वेस्ट है कि फार्मेसी काउंसिल इंडिया का जो भी सहयोग आपको चाहिए वो देने के लिए रेडी है। इसीलिए मैं आज जुड़ा हूँ, क्योंकि मेरा थोड़ा टाइट स्केड्यूल था, फिर भी मैं आप लोगों को एक मैसेज देने के लिए, फार्मेसी काउंसिल इंडिया का जो काम है उसको थोड़ा पब्लिकली ले जाने के लिए आप लोगों का सहयोग चाहिए, क्योंकि बहुत सारे 75 साल हमारे एक्ट के हो गए, 75 साल हमारे 75 साल में हमारे देश को भी 75 साल हो गए। तो अब 75 साल के बाद अब हम क्या करना चाहते हैं वो भी हमको सोचना चाहिए और नया विजन के साथ सोचना चाहिए, क्योंकि जो हुआ उसमें हम कुछ बदलाव नहीं कर सकते, पर आने वाला समय हम जरूर बदल सकते हैं। उसके लिए सभी लोग हमारे फार्मेसी प्रोफेशन के और वाई के गुप्ता जी जैसे लोगों को, और जी.डी. गुप्ता जी है, फिर चेयरमैन प्रवीण जी है, और आप सीनियर जितने भी लोग हो, आप लोगों का जरूर सहयोग चाहिए पीसीआई को, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और इस इवेंट की आप सभी लोगों को शुभकामनाएं, और आप अच्छे से अच्छे मैसेज पब्लिकली जाए, प्रोफेशन में जाए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। Thank you very much, sir. Thank you. Over to Madam Aarti. Thank you very much, sir, for providing the valuable information regarding the pharmacy, and we really appreciate your time and effort. Thank you very much, sir. Now I request Professor Y.K. Gupta for his kind speech.
नमस्कार to everybody and अगर मोंटू भाई पटेल जी हैं अभी तो 2 मिनट रुक जाएं, तो मैं सबसे पहले शुरू करूंगा क्योंकि मोंटू भाई जी को जाना है, तो 2-3 बातों से. And my apologies for picky essay because I will be speaking a part of initial talk in Hindi. ये जो ओकेजन है जिसमें गुप्ता जी ने और आईएसएफ ने मोंटू जी को बुला लिया यहाँ पे, तो ये एक बहुत ही स्ट्रेटजिक तौर पे बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हो गई है. क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के फार्मेसी कॉलेज की पढ़ाई, वहाँ की रिसर्च, वहाँ की ट्रेनिंग, इनके नेतृत्व में ऐसी हो जाए कि फार्मेसी इंस्टीट्यूशन से निकले हुए जो फार्म बी हैं, फार्म डी हैं, जो एम फार्मा हैं, जो पीएचडी हैं, वो इंडस्ट्री में, चाहे हिंदुस्तान की इंडस्ट्री में हो, चाहे बाहर की इंडस्ट्री में हो, ऐसे खींच लें. उनकी जो तनख्वाह आज 15,000 16,000 है, वो कम से कम 40,000 से शुरू हो. विदेशों में चाहे वो किसी भी दुनिया में किसी भी जगह पे हो, उनका एक रिस्पेक्ट हो और उनकी ट्रेनिंग करने की भी जरूरत नहीं हो. ये तभी हो सकता है जब हमारी पढ़ाई, हमारे करिकुलम, हमारी ट्रेनिंग कंटेम्परेरी हो. आज की ट्रेनिंग ऐसी हो जो कि आज के विषय वस्तु से मिश्रित होती हो. आज की जो मेडिकल साइंस में, मेडिकल ट्रीटमेंट में, थेरेपेटिक्स में जो एडवांसमेंट करें, वो वहाँ पे एप्लीकेबल हो. हमने कई बार बड़े बड़े कमेटीज में, जिसके हम चेयरमैन भी थे, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन में, यही कहा कि एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के, फार्मेसी इंस्टीट्यूशन के प्रोफेसर की ट्रेनिंग इंडस्ट्री में जाके करनी चाहिए. इंडस्ट्री के लोगों को आप बुलाइए एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में एग्जामिनर बनने के लिए, चेयर करने के लिए. इंडस्ट्री को हमने कहा है अपने रिकमेंडेशन में कि हर कॉलेज में, फार्मेसी इंस्टीट्यूशन में अपना इंक्यूबेशन सेंटर बनाएं, वहां पर जाके सीखें. सिर्फ प्लेसमेंट करने के लिए न जाएं, वहां से बच्चे खींचने के लिए. अरे वहां पे इंटरेक्ट करो. जब आपके टीचर्स, जब आपके गाइड टॉपिक ढूंढें, तो देखें कि इंडस्ट्री में क्या रिक्वायरमेंट है, वही टॉपिक दें. हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि कोई पीडीएफ करके आ गया बाहर से, अब वही अपने पीडीएफ के आगे को टॉपिक दे रहा है. इसकी कोई रिलेवेंस नहीं है. स्टॉप कर दो अपनी फैशन रिसर्च को. वो रिसर्च करो जो देश में जरूरत है, वो रिसर्च करो जो इंडस्ट्री में काम आए, वही ट्रेनिंग कराओ जो इंडस्ट्री में काम आए. हमने मोंटू जी के साथ में डिस्कशन किया कि हमारे यहाँ फार्म डी इतनी काबिल एक प्रोफेशन की स्ट्रीम है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे ठीक से. क्यों? क्योंकि हमको चाहिए, यही हम बात कर रहे हैं कि मेडिकल कॉलेजेस से, मेडिकल इंस्टीट्यूशन से, एम्स से कोलैबोरेट करें कि हम इनकी ट्रेनिंग वहां पे करें. मैं आईएसएफ मोगा में कह के आया था कि 20 बच्चों की ट्रेनिंग हम एम्स भोपाल में कराएंगे. एक ने भी एप्लीकेशन नहीं दी. शर्म की बात है, चैलेंज की बात है. ये एक लड़के ने भी आकर के एप्लीकेशन नहीं दी. जब हमने लेक्चर लिया तो सब बड़ के बोल रहे थे, साहब हमको फार्म डी के बाद स्कोप नहीं. अरे स्कोप कब होगा? जब आप खुद उसके लायक बनेंगे. तो आपको अपनी प्रोफेशन की, जैसे अभी मंटू जी ने कहा कि आपको अपनी खुद मदद करनी होगी, और मंटू जी जैसे अभी एक्टिव लोग आपके साथ में हैं, तो इसका पूरा अवसर का फायदा उठाइए. मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जो मैंने कई जगह कही, हमारे नाइपर्स हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज हैं, ये हैं बहुत बड़े, लेकिन हमारे जो सेकंड टियर के इंस्टीट्यूशन है, जो छोटी जगह पे इंस्टीट्यूशन है, जिनमें डायनेमिज्म है, जिनमें कुछ कर गुजरने की चाह है, हमको वहां पे हिसाब किताब करना है, हमको वहां पे प्रमोट करना है. और उसमें इसीलिए मैं मोगा से जुड़ा हूं थोड़े दिन के लिए, कि ऐसी हमको प्रेरणा वाली जगह पे, जहां पे जोश है लोगों में काम करने का, ऐसे लोगों को हमको प्रमोट करना है. देश में ऐसे कुछ सेंटर्स आइडेंटिफाई करें और उनको मौका दें. इसलिए ये इस तरह की इंटरनेशनल वर्कशॉप यहाँ पे ज्यादा महत्व रखती है.
एम्स में, नाइपर्स में तो इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस होती रहती हैं। लेकिन जब हम इस तरह के जो हम कह सकते हैं होनहार वीरवन कि होत चीकने पात, तो ये जो चीकने पात को आप अगर पहचान लें और वहाँ की उनके फैकल्टी को, उनके बच्चों को ट्रेनिंग दें, उनकी पॉलिश करें, तो ये जो कोयले हैं ये चमक के हीरा बनेंगे। और हमको यही चाहिए देश के हर सेंटर के फार्मेसी इंस्टीट्यूशन में। तो फार्म डी एक ऐसा स्ट्रीम है जो कि मुझे लगता है कि अभी अंडर यूटिलाइज्ड है, और इसको प्रॉपरली यूटिलाइज करने का काम हम और मोंटू जी करेंगे। और लेकिन हमको फार्म डी स्टूडेंट से अगर सहयोग नहीं मिलेगा तो वो वैसे के वैसे ही रहेंगे या उससे भी बदतर हो जाएंगे, क्योंकि जब तक उनमें फ्रस्ट्रेशन खत्म नहीं होगा, जब तक उनमें जोश नहीं आएगा, जब तक खुद करेंगे नहीं। मुझे बड़ा अफसोस के साथ में पब्लिकली मैं कह रहा हूं कि मोगा इंस्टीट्यूट के फार्म डी स्टूडेंट्स को मैंने 3 घंटे एड्रेस किया, 3 लड़कों ने भी अपनी एप्लीकेशन की का प्रोजेक्ट नहीं लिखा कि वो क्या करना चाहेंगे। ऐसे अगर हमारे पास इतने अच्छे इंस्टीट्यूशन में जब ऐसा हो सकता है, तब हमको एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है। तो मैं यहाँ पे खास तौर से मोंटू जी के प्रेजेंस में ये कहना चाहता था कि हमें पूरी उम्मीद है कि इनके कार्यकाल के दौरान फार्मेसी का जो एक प्रोफेशन है एक टर्न अराउंड होगा और एक देश के लिए एक इतनी बड़ी शक्ति बनेगा कि यहाँ पे फार्मेसी की वही रिस्पेक्ट होगी प्रोफेशन में जो कि यूएसए में है, जो कि यूरोप में है। वहाँ पे डॉक्टर से ज़्यादा फार्मासिस्ट कमाते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती है। तो यहाँ पे हमने कई बार क्या देखा है कि फार्मेसी फार्म डी फार्मा किया और डी फार्मा डिप्लोमा करने के बाद अपना सर्टिफिकेट उन्होंने किराए पे दे दिया, क्योंकि उस सर्टिफिकेट से ही इनकम हो जाती है, तो वो अपना दूसरा काम कर रहे हैं। तो वो हमको अपने आप लोगों से मतलब खुद ही हमें उस पर रोकना होगा और इस प्रोफेशन को उस बुलंदी पे ले जाना होगा जो ये डिजर्व करता है रिसर्च में, प्रोफेशन में। सो मोंटू जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ पे आए और आप ऐसे अगर आते रहें तो लोगों का मनोबल बहुत बढ़ता रहेगा। थैंक यू सर, थैंक यू गुप्ता जी, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर। मैं बस 1 मिनट जोड़ना चाहता हूँ। सर ने जो कहा है एम्स वाला, तो मैं बड़े विनम्र भाव से कहना चाहता हूँ सर कि उस समय जब सर का प्रपोजल था वो उस समय सितंबर के करीब था, तो चूंकि बच्चे अपना हॉस्पिटल ऑक्यूपाई कर चुके थे पोजीशंस को, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ सर कि जो आपने 3 कहा, मैं इसके आगे 1 जरूर रखना चाहूंगा और 13 विद्यार्थी बिल्कुल इस बार जुलाई से रेडी है सर। तो हमने होमवर्क कर दिया है, क्योंकि हम तो अच्छे हॉस्पिटल की तलाश में हैं सर, जहां बेस्ट टू बेस्ट ट्रेनिंग हो सके। और आप जैसे व्यक्तित्व का अगर मेरे ऊपर आशीर्वाद है सर, तो मैं उसको 100% पूर्ण करूंगा, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर। एक से बात करने के लिए हेलो। हाँ सर नमस्कार। नमस्कार सर, मैं डॉक्टर रीना, जीएल यूनिवर्सिटी मथुरा से। आई एम बी फॉर्म गोल्ड मेडलिस्ट, एम फॉर्म गोल्ड मेडलिस्ट। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि आप जैसा व्यक्तित्व हम लोगों की लाइफ में आए जो कि फार्मेसी प्रोफेशन के लिए इतना अच्छा कर रहे हैं। आई अप्रिशिएट सर एवरीथिंग। 2 चीजें हैं सर, अगर आपसे कोई जुड़ना चाहे या बात करना चाहे तो हाउ इट इज पॉसिबल, हम किस तरीके से आपसे बात कर सकते हैं जहां अपनी परेशानियां या पर्सनल थिंग्स जो हैं वो हम आपसे अपनी शेयर कर सकते हो? नहीं, आप मेल करो, मैं मेल सारे देखता हूँ। और मोबाइल नंबर तो है ही मेरा, ठीक है, सभी के पास है सर। मोबाइल नंबर मैं जीडी सर से ले लूंगी, ही नोज मी वेरी वेल। तो मैं बिल्कुल चाहूंगी सर, और बिल्कुल कंधे से कंधे, हम बहुत ईमानदार उस प्रोफेशन के व्यक्ति हैं जिससे आपसे उम्मीद की थी कि सर बिल्कुल वैसा ही परफॉर्मेंस आ रहा है। हम लोग इतने खुश हैं कि फार्मेसी प्रोफेशन बढ़ता जाए और आपके सानिध्य में हम लोग इतना बढ़िया परफॉर्म करें, सभी लोग की पीसीआई का बिल्कुल नाम बहुत ऊंचा जाए सर। थैंक यू वेरी मच जाएगा मैडम, पीसीआई का जाएगा तो ही प्रोफेशन का जाएगा डेफिनेटली सर। इतने सालों से जो जंग लगी हुई थी उस जंग को आपने निखार दिया सर। दैट्स अ वेरी गुड अप्रिशिएबल थिंग्स कि लोगों को पता नहीं था कि क्या होता है पीसीआई। आज एक एक व्यक्ति को पता पड़ गया 6 महीने के अंदर कि पीसीआई कहाँ होता है, क्या होता है और कैसे होता है। दैट इज वेरी गुड सर, वेरी गुड सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू।
Thank you, GD sir, for giving me time. Okay, thank you. Thank you, ma'am. Now I request Professor Y.K. Gupta for his speech. Thank you very much, आरती. एंड सबसे पहले मैं थैंक्स देना चाहूँगा हमारे चीफ गेस्ट जो अभी समय की वजह से चले गए, और फिर आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू माय वेरी गुड फ्रेंड, कोलीग एंड इंचार्ज ऑफ नेशनल GLP अथॉरिटी, डॉक्टर एकता कपूर. एंड डॉक्टर एकता कपूर का खास तौर से इसलिए आई अप्रिशिएट दैट हम हमेशा कोशिश करते हैं कि चाहे GLP हो, चाहे GCP हो, चाहे साइंस राइटिंग की इशू हो, वी गो टू दी 2-tier मेडिकल कॉलेजेस और 2-tier फार्मेसी इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री. अभी मैं 2 दिन पहले गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में हम एक वर्कशॉप का इनॉग्रेशन करके और वहाँ पे देख के आए, रिसर्च मेथोडोलॉजी में और मेडिकल एथिक्स में. तो हमको लगा कि हम सिर्फ एम्स में केंद्रित नहीं होना चाहिए, हमको सिर्फ बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस में केंद्रित नहीं होना चाहिए. एंड दैट्स व्हाई वी डिस्कस विद द करंट DG ICMR एंड ही अप्रूव्ड outreach program, create awareness on ethics and regulations in clinical research in at least 100 2-tier medical colleges in next year. So he asked me to coordinate it. तो हमको ये जो 2-tier pharmacy institutions हैं, उनको we have to bring them up so that they become the leader, not the follower. And they have a competence, they have a capability. And I appreciate IBRO that they have given this opportunity to this institution, ISF. And such opportunity, अगर कहीं किसी कॉलेज को मिलती है, then they should encash on it. सिर्फ वर्कशॉप करना नहीं, they should cash on it. How they will cash on it? You do this workshop, learn this, और उस टेक्निक को अपने यहाँ पे इम्बाइब करो, अपने यहाँ पे लगाओ, and then you diversify this into entire India and maybe southeastern country. Then you will become leader. और उसके लिए आपको नई चीजें करनी होंगी and develop new models, publish them. And I have been telling again and again to ISF Moga, then organize several training workshops, because I am very happy that ISF Moga has developed techniques or models for multiple sclerosis, models for Parkinsonism, models for stroke, and models for plasticity, and models for zebrafish, different models of neurodegenerative disorders. And Dr. Shamsher Singh is the leader in this. Dr. Mehan is an excellent scientist in this. Aarti, तो ये जो एक हमारा critical mass of scientists, neuroscientists in Aarti, and of course the many other colleagues including Charan. So you are now should occupy the center stage in the country. And I am very happy to see that the senior colleagues, and of course a very good friend of mine, student friend, Dr. Shyam Sundar Sharma is here, Dr. Pankaj Seth, and all those people are here. Now, that's why there is a need to have more such workshops. So I compliment and I congratulate ISF College for organizing this. I take this opportunity to say a few appreciation word to Chairman Mr. Parveen Garg ji, and also Er.Janesh Garg and Muskan. क्या होता है कि बहुत सारे पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशन में जो मैनेजमेंट है,
They're hardly interested in what is happening in science and academics. They're only interested कि कितने हमारे यहाँ एडमिशन हो रहे हैं, कितना पैसा आ रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है. But I have seen this difference in this institution where they are equally, the presence, mere presence of these people in all such scientific activities and putting money into this is something very important. And they provide all encouragement, whether fund, whether time, whether promotion, whether anything in organizing such things. So I really appreciate such management, and I wish that all such private institutions, they prefer it and they feel pride. ये हमारा इंस्टीट्यूशन आज इस रैंक पे पहुंचा है, हमारे इंस्टीट्यूशन का ये इम्पैक्ट फैक्टर है, इतने पब्लिकेशन हो गए, and that should be the matter of pride for all such colleges. And I also appreciate Mr. Narang and G.D.Gupta ji for that. So Dr. Narang is a backbone of entire thing, and Dr. G.D.Gupta, I think the leadership matters. So congratulations to all of them. Now coming to this topic of nanoneurotherapeutics and neurological disorders, I think is such an important thing. Neurological condition is considered to be number 2 or sometimes number 3, the largest morbidity and sometimes mortality. And morbidity, when there is a paralysis, when there is epilepsy, when there is a neurodegenerative disorders, when the dementia, collectively ये जो morbidity होती है, they're crippling morbidities, and people suffer a lot. And what has been said that the stroke, the epidemiology of a stroke is that total number of death in stroke in the world is much more than the combined death because of AIDS, because of malaria, because of tuberculosis. Now you can imagine कि अगर हम सारा tuberculosis की death, malaria की death, AIDS से death सबको मिला दें, उससे भी ज्यादा stroke से death होती है. Malaria इन सब में तो death हो जाती simple. Stroke के बाद death होती है धीरे धीरे, और वो बड़ी कष्टदायक होती है. Epilepsy and dementia. Now the figure of dementia 119 million means 19 करोड़ 18 करोड़ लोगों को dementia दुनिया में है, और ये dementia इतना तगड़ा है कि वो आदमी को एक अल्जाइमर डिजीज, वो अपने बच्चों को भूल जाता है, बीवी को भूल जाता है, अपने घर में टॉयलेट कहाँ है वो भूल जाता है, स्टेशन पे घूम रहे थे लोग, उनको अपने घर जाने का पता नहीं पता. ये जो डिमेंशिया के जो स्टेटस है, अल्जाइमर का जो स्टेटस है, इतना सीरियस है, और इसकी अनफॉर्चुनेटली अभी तक कोई आइडियल दवाई नहीं है. There is a no ideal treatment. I am saying ideal treatment. ये ideal treatment, no ideal treatment was the slide when I was a student in 1976 when I was doing MD. And the same slide still remains valid. There is no ideal treatment for epilepsy. There is no ideal treatment for stroke. There is no ideal treatment for Alzheimer's. And there is no treatment for multiple sclerosis, and so on and so forth. Why? Because this is such a complex, neuroscience is such a complex disorder. Starting from, there is not one neurotransmitter which is involved. In Parkinsonism, we say that it is a dopaminergic deficiency. In epilepsy, we say that this is excitatory amino acid more, and then inhibitory amino acids are less. And in stroke, we say that this is a neuronal degeneration takes place, and then it is a progressive, and then this leads to. But the question is how to develop a drug which will create in epilepsy, which will restore the balance of the transmitter, which will reduce the post-ictal degenerative process, and which will reduce the complication of epilepsy, maybe whether it is a cognitive impairment, or whether it is the depression, or whether it is the anxiety which follows, or whether it is a stroke after epilepsy, which is again a symptom. The important thing here is that how you can develop a drug which will reach at the time of infection or at the time of the disease into the brain, not only in the brain. If I want to go into the Parkinsonism, I'm not interested that the drug will go into the brain, which is done by the levodopa, but I am interested in a drug which will reaches in only substantia nigra.
or putamen. So I am interested selectively that my drug should reach in glioblastoma into the glioblastoma cells, degenerating or the multiplying cells, not around this area, not in the brain. So how it can be done? Levodopa has been an age old कि हमने एक बहुत बड़ी तगड़ी डिस्कवरी करी, at least we have been shifting the drug from periphery to center. But now the aim is how to reach the neuron firing and at that place so as to reduce the possibility of the error and side effects. And here is the importance of nano. I have been chairman of Nanoneurotherapeutics for almost 9 years in DBT, and we have funded more than in 10 years. But the important issue now we are asking to the country, to the scientists, अरे भाई इतना फंडिंग करने के बाद कौन सी नैनो फार्मास्यूटिकल दवाई हमने निकाल पाए? So I have been very giving a warning to all scientists working in do not work in nano, do not reason for that. And we published, in fact, I chaired that meeting and then a chairman of the committee which has developed नैनो की ड्रग को सबसे पहला क्राइटेरिया होगा कि भाई क्या जरूरत है, क्यों बना रहे हो इसमें? ये थोड़ी है कि आपने नैनो की आपने एल्बेंडाजोल बना दी, नैनो की पैरासीटामोल बना दी, नैनो को मॉर्फिन बना दिया. अरे भाई इसमें जब जरूरत ही नहीं है तो क्यों कर रहे हो काम? So first you must get convinced that why you need a nano, because nano is a technique. It may have its own repercussion. It is not a absolute. So and then you have to look for the standardization process. कि आप करोगे कि उसमें क्या है, कितने साइज का नैनो डिस्पर्शन क्या है, उसका 0 से 10, 10 to 100, 0 means 1 to 10, 10 to 100, 100 to 1000, के इसमें क्या उसका डिस्पर्शन है, and how you will standardize it, how you will validate it, and so many criteria we have. जब आप नैनो में रिसर्च करें, please go through that guidelines also, so that right from the beginning you are keeping in mind how you are going to translate this. So remember one thing, don't do a research unless you have translational aspect of this in mind. How you are going to position the research, how you are going to position the product, whether you are going to position this as an add-on, or whether you are going to position this as a standalone, or whether you are going to position this as an unmet need of the country, and what could be the potential precaution in the clinical trial. ये सारी चीजें आपको right from the beginning सोचनी चाहिए. See, and I would say this type of workshop is very important, particularly there is a need to develop models, and the models are so many models. We have epilepsy, right from what we were doing is the conventional PTZ model, MES model, then the kindling model and all those. But now the things are changing now. Now you are looking at the genetic models. Now you are looking at what can be the different model which can give faster results and quicker results. And then this has to be associated with the biochemical changes simultaneously. And that too, not only one estimation, but maybe a group of. ये सिर्फ important नहीं है कि हमने neurotransmit कर दिया, but important thing is how to interpret the interplay of these neurotransmitters, which changes fraction to fraction, and then which drug would be the best fit. Never now attempt to correct all the abnormalities by one drug or a drug acting on the one side. Now, it is important that you look for correction of this through the different mechanism. So, several mechanisms. So, this is very important thing which
requires lot of deliberation. So neuroscience is one of the most complicated, complex science. Don't make it simple, but thinking process has to be much more involved in this, and such workshop will definitely involve it. There are several institutions like IBRO, like Brain Research Institute. There are several institutions which are working. Unfortunately, the neuroscientists, when we used to work on in the lab, still I go and try to do that wherever I get an opportunity. अब न्यूरोसाइंटिस्ट पहले से आधे भी नहीं रह गए, और उन आधे जो बचे हैं उनमें जोश हमारा जब तक डबल ट्रिपल नहीं होगा तब तक हमारे पास नए स्टूडेंट्स नहीं आएंगे. So you have to motivate your PhD students, MSc students, that yes, this has a more potential. And this is where the cardiovascular and neuroscientists, पहले अगर किसी कॉन्फ्रेंस में जाते थे, एक session, there used to be session of cardiovascular neurosciences, maximum number of presentation. Now these sessions, there are hardly 10 presentation as compared to social pharmacology, इधर उधर का जिसमें कि कोई साइंस ही कम है, बातें ज्यादा हैं, उसमें publication बहुत है. That is also important. But here, this hardcore science has to be made interesting, doable, and that can happen when there is a collaboration between the institution. Interact with more institution, collaborate with more institution, and funding opportunity which IBRO has shown is much more when we used to work in neuroscience. So much of opportunities, avail those opportunities. And I again compliment this institution for working on nanoneurotherapeutics, and I compliment and congratulate the speakers. I see Dr. Anil name, Dr. Tushar, Dr. Pankaj, Shyam, and Pradeep from Africa, and I think this is extremely good. And so congratulations again to Thank you very much, sir, for your words of wisdom. Now, on behalf of organizing committee, I take the privilege of proposing a vote of thanks. I would like to thank all the honorable delegates who blessed us with their gracious presence. I am also very thankful to ISFCP and the invited speakers from national and international platform. Words are not enough to thank their constant guidance and support to shape the program. I, on behalf of organizing committee, convey deep regard and hearty thanks to our Honorable Chief Guest, Dr.Montu K. Patel, for accepting the invitation and who honored this function with his kind words. I would also like to thank Chair-IBRO-APRC, Dr. Pixi, for her remarkable presence and kind support for organizing this international school. I am very much thankful to the international sponsoring agency, ISFCP, as they supported in all possible manners to organize this international school. It would have been impossible to organize it without their support. I'm also thankful to the guest of honor and keynote speaker, Professor G.D.Gupta, sir, for your eminent presence. And that has indeed made this event a memorable one. And we unitedly thank you for your gracious presence. I would also like to thank guest of honor, Dr.Ekta Kapoor, who graced us with her kind words. My special thanks to Dr. Charan Singh, Convenor AIIMS-Bhopal Associate School, for his help and support at various stages and his valuable contribution. My sincere thanks to Sh.Parveen Garg, Chairman ISF College of Pharmacy, Moga, Engineer Janesh Garg, Chairman TLF Global School, Professor G.D.Gupta, Co-Convenor AIIMS-Bhopal and Director ISFCP, Vice Principal, ISF College of Pharmacy, Professor R.K. Naran, for their kind support. I would also like to thank the head of the various departments and faculty members of ISF College of Pharmacy, Moga, for their gracious presence. Finally, I would like to thank all the IBRO awardees and participants for participating in the event. And we have also fortunate enough to be backed up by a team of very motivated and dedicated faculty, students, and committee and volunteers.
I would also like to thank the IT department, especially Mr. Paneet Kumar, for coverage of the event. I would also like to thank you very much. And I would also like to invite everyone to attend the technical session, which is going to begin at 2 p.m. with the eminent speakers from national and international platforms. So once again, I thank you all for your kind attention. Thank you very much. Now I request all of you to please stand up for national anthem. की जय हे भारत भाग्य पंजाब सिंध गुजरात मराठा हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधर रवि शोभे नामे रागे रवि शोभे आदित्य मामे गाये तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे भारत माता की जय. Thank you very much. Thank you very much, sir. From all technical session you can announce so that everybody with the speaker name will mention, and I will also run the show before to the last of the lecture. We can give the another day schedule to each and everybody. So I request to all, as you know that this is the online platform, so please mute your side. This is the first of the mandatory, and after the every lecture our chief member giving to the at least 5 to 10 minutes, or as per the dependency of the time if the speaker allow like that. So 5 minutes after each lecture we have the discussion, so you can open your or raise your hand, or you can send your query to the chat box. YouTube channel is also active. If you have any time, any types of the difficulty to attend this function, you can send your message, because as you know that as per the IBRO rules and regulation, we have registered 35 as a awardee and 100 of the as a participant. And awardee and participants only they can be attend the function, and those person who want to listen the lecture and want to contribute, they can connect to the YouTube channel. So I hope that during these 4 days we can enjoy, we can discuss, and we can learn so many things with the speakers, because all speakers have the high experience